Good evening students, welcome to Commerce Canpit Odisha. Today we will complete the remaining portion of this chapter, law of variable proportion and law of returns to scale. ठीक अछि काली हम देखथिलु डिफरेंशिएशन ता माने दीटा भितर law of variable proportion and law of returns to scale भितर आज हमें पूरा law टा in detail जानिबा from the exam point of view. law of variable proportion and law of returns to scale जहाँ भी अच्छी सेटा हमें अलगा अलगा जगह रे अलगा अलगा भाବରେ पढु प्लस 3 पे अलगा थिबो इकोनॉमिक्स हॉनर्स पे अलगा थिबो फाउंडेशन पे अलगा थिबो सीए फाउंडेशन पे अलगा थिबो तो सीएमए फाउंडेशन रो कोन कोन इंपोर्टेंट एस्पेक्ट सेटा हमें आज डिस्कस करी ठीक अछि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रो ऑलरेडी मु कहिथिली कोन इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन द शॉर्ट पीरियड माने कोन शॉर्ट रन रो हम एग्जांपल नेथिलु 6 मंथ्स according to this law output can be changed by changing some factors while other factors are constant. So this is called law of variable proportion. Alfred Marshall देछि तो आइरो एबे इंपोर्टेंट नोट्स वगैरह हमें लिखिबा ठीक अछि हेडिंग दियो law of variable proportion भल से सुनिबो उथरे बुझा पड़ी जेबो नाइली कहले कंफ्यूजिंग पार्ट जदी रहि जोची देन फसी की रहि जेबो law of variable proportion लेखो ता तळे according to this law if we increase the units of variable factor in short run the total product first of all increases at an increasing rate and finally at a diminishing rate law of variable proportion कौन कहउची ना as per this law if we increase the units of what which factor variable factor obviously मूर्ख ना कोन माने जे हमर जहां भी वेरिएबल फैक्टर अछि सेडा हम इंक्रीज और डिक्रीज करि परिबा फिक्स्ड फैक्टर ता केबेल हम वेरी करि परियानी हला तो वेरिएबल फैक्टर जहां भी अछि सेडा शॉर्ट रन पीरियड रे जेतळ को मैं अल्टर करछु तो टोटल प्रोडक्ट रो बिहेवियर केमति रहइबो सेडा हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रो जानिबा है ना राइट ऑफ द assumptions here assumptions कौन अच्छी first thing is it is applicable in short period then asche amaro labor is assumed to be the only variable factor and the remaining are fixed factors बुझिला third thing is units of labor are homogeneous there is no change in technology बुझिला
law of variable proportion ro assumption गुड़ा कौन it is applicable in short period short run रे बेसी applicable होची generally this law is designed for short run analysis. Second thing is labor is assumed to be the only variable factor and the remaining are fixed factors. जेतिकी भी हमर remaining factors होची सब गुड़ा fixed खाली labor गुटा कौन variable factor. Units of labor are homogeneous माने कौन जेतिकी भी labor employ होचंदी समस्ते same nature रो laborers गुड़ा गो. Then there is no change in technology. समस्त को गोटे प्रकार machinery दिया अछि समस्त को गोटे प्रकार technology ना available होच. एतिकी assumptions नै करी आमे जिबा जायगिरी कोन देखिबा ना variable factor टा increase हेले केमिति हमर total product टा change होची. काली हमें देखथिनो total product रो meaning कोन total product रो meaning कोन ना the total the sum of the products that are produced in the entire production span माने पूरा production span रे केतिकी production process टा हमें carry out करलो that's our total product. तो सेटा केमती चेंज हबो सेटा हमें गोटे एग्जांपल थ्रू रे डेमोंस्ट्रेट करबा बुझिला से कहउछ कोन द टोटल प्रोडक्ट एट फर्स्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड फाइनली एट अ डिमिनिशिंग रेट माने आमे जानछु कोन वेरिएबल फैक्टर जेतलो हमें गोटे गोटे करी के इंक्रीज करछु तो शॉर्ट रन पीरियड रे सबोले इंक्रीज आका होछि बट जो पेस रे इंक्रीज होछि सेटा फर्स्ट रे इंक्रीजिंग रेट रे होछि तापर कोन डिक्रीजिंग रेट रे होछि क्लियर एबे देखिया हमें एग्जांपल एग्जांपल टा बेसी इंपोर्टेंट हैला फर्स्ट लेखा क्वांटिटी ऑफ लेबर देन टोटल प्रोडक्ट जोड़े की टीपी देन आसे हमरो एवरेज प्रोडक्ट व्हिच इज एपी देन आसे हमरो मार्जिनल प्रोडक्ट काली ए वर्ड्स रा मीनिंग में बुझैथिली मार्जिनल दिस इज एमपी हैला तो रिवीजन ऑफ द बिफोर कांसेप्ट्स इज वेरी इंपोर्टेंट जदी से मीनिंग माने कीवर्ड्स रा मीनिंग तमे जानि पारनो तो तमे लॉ बुझला को कंफ्यूजन हे पारियो अगेन हम तमर रेफरेंस पे कह दोची टोटल प्रोडक्ट माने होची टोटल प्रोडक्शन प्रोसेस रे केति की सम हैला एवरेज प्रोडक्ट माने होची कोन गुटे लेबर केति की एवरेज प्रोडक्ट दोची माने 10 प्रोडक्ट्स हैला 5टा लेबरर्स अछंदी तो एवरेज गुटे लेबर केतिरा प्रोडक्शन करला 2टा यूनिट प्रोडक्शन करला मार्जिनल प्रोडक्ट कोन गुटे एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंट्रोड्यूस करिगिरी हमरो टोटल प्रोडक्ट टा केति की इंक्रीज होच माने एवरेज केति की इंक्रीज होच क्लियर गोइंग विथ द टर्म्स नाउ एबे हम जानिया कोन क्वांटिटी ऑफ लेबर केतिरा अछंदी 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक अछि 8टा टोटल प्रोडक्ट टा केति की अछि हमरो 2 5 9 12 14 15 and 14 clear average product formula कोन जानि थिबो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग average product is equal to total product by n केतरा क्वांटिटी अछि हैला क्यूब एडा होछि कोन हमर क्वांटिटी हैला ap is equal to tp by quantity बुझला तो होछि हमर 2 2.5 देन आछि हमर 3 3 2.8 2.5 2.1 and 1.7 हैला एबे देखिए हमर मार्जिनल प्रोडक्ट टा केमि इंक्रीज हैछि मार्जिनल प्रोडक्ट केते अछि फर्स्ट 2 रा 2 रहबो 2 टू 5 हैला को केते के इंक्रीज हैछि 3 5 टू 9 हैला को 4 9 टू 12 हैला को 3 then 2 then 1 then 0 then -1 बुझी पालो एडार इंक्रीज टा होचे हमरा मार्जिनल प्रोडक्ट बुझेबा पे सिंधी आरो मार्क देछि एडा होची कोन हमरा मार्जिनल प्रोडक्ट माने गुटे एडिशनल यूनिट वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज हैला को हमरा टोटल प्रोडक्ट रो बिहेवियर केमती इंक्रीज होची अच्छा तो हमें ए टेबल टा कोन पे बनैलु ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जोडा कहउची सेडा माने केते जे सत्तो सेडा जानबा पे तो फर्स्ट को फेज रे इंक्रीज होचे हमें देखिबा फर्स्ट तीनटा फेज रे हमें देखिलो कोन इंक्रीज होची increase phase
देन कौन होची डिक्रीज और डिमिनिशिंग फेज डिक्रीज और डिमिनिशिंग फेज क्लियर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कौन कहला हम एटा पूरा वर्णन कहले कंफ्यूज हो जिवो हैना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कौन कहउची जेतळको हमर गुटे गुटे यूनिट इंक्रीज हेगिरे जाउची हैला गुटे गुटे यूनिट इंक्रीज हेगी जाउची हमर जहां भी टोटल प्रोडक्ट अछि सेडा रे हमको ओवरऑल देखला कोन लाउची जे सब बळे सेडा इंक्रीज आगा होउची बट जनरली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन गुटे जिंस कहउची हमर गुटे एडिशनल यूनिट जेतळ हम इंट्रोड्यूस करी करी की जिबा स्टार्टिंग रे जेबे इंक्रीज हबो सेडा इंक्रीजिंग फेज रे हबो देन कि हबो इंक्रीज हबो बट डिमिनिशिंग फेज रे हबो माने सेडा हम केमती जानिबा ना गुटे गुटे माइनस करी की देखला को हमको एडिशनल यूनिट रे बिहेवियर ता जाना पड़िबो जेमती कि हम देखिलु गुटे क्वांटिटी थिला जीडा करला को हमर कोन इंक्रीजिंग फेज रे चलतिला माने 2 टू 3 हैला 3 टू 4 हैला 4 टू कोन हैला 3 हैला तो फर्स्ट रे इंक्रीजिंग फेज चलतिला देन कोन डिमिनिशिंग फेज आसला दिस इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हैला खाली कोन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रे वेरिएबल फैक्टर ता जो मन नबा कोची सेटा सब बळे लेबर आगर रहइबो लेबर ता जेतला हम इंक्रीज करी करी की जिबा हमर इंक्रीजिंग फेज रे इंक्रीज हबो देन डिमिनिशिंग फेज रे हबो assumption जारे कोन कहछि देखो इट्स एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट पीरियड एटा शॉर्ट रन रे कैलकुलेट हे परियो लॉन्ग रन रे हम एते जा जिंसो कैलकुलेट करि परिबानी देन कोन लेबर इज assumed टू बी ओनली वेरिएबल फैक्टर बाकी सब फैक्टर हमर फिक्स देन कहछि कोन जेति कि भी लेबर माने अछन सब होमोजेनियस देन कहछि कोन देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी क्लियर बुझिला एते कि एबे देखो से कोन कहछि टेक्स्ट बुक रे An increase in the amount of labor and capital applied in cultivation of land causes in a general less than proportionate increase in the amount of output raised unless it happens to coincide with the improvement in the arts of agriculture. अच्छा मार्शल जेतु से इन्वेंट करची से गुटे कोन से सेफ साइड रे रहया पे कोन कहउची एडा जनरली मु कहि देली बट जदी तमे बेसी भलो एफिशिएंट एग्रीकल्चरिस्ट को सेडी रखिबो तो मे बी सेडा इंक्रीज भी हेई पारे माने से कहयाडा कोन जानछ ना एग्रीकल्चरल लैंड अछि रे हैला एग्रीकल्चरल लैंड रे जे भी गुटे चासी काम नॉर्मल चासी गुटे इंट्रोड्यूस कराइछ हेले सी कोन एवरेज जिंती एग्रीकल्चर चालिया कथा चालियो बट जदी गुटे स्किल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट को हमें आणुछु सी कोन करिया जानछ ना फर्स्ट रे कोन गुटे रूट माने गुटे रूट ता प्लांटेशन करबो रूट प्लांटेशन करला को कोन हबो रूट्स गुडा को स्ट्रांग थिबो हैला रूट्स गुडा को स्ट्रांग थिबो जेंति कि बीटरूट शुगर केन इम्ति फार्मिंग करला तापर कोन हबो जतल को ऊपर जिंस जागो माने जेंति किन को जने मर्च हैला तापर ग्रेप वाइन कि नले कोन जो पाणपत्र हमर जो कहउछन सेउडा कोन स्टेम रे इम्ति हुए हैला वाइन गुडा करे हुए तो कोन से रूट गुडा रे एते हेल्प होबनी तो रूट को रेस्ट मिलेबो तो फर्स्ट कोन करियो रूट रो प्रोडक्शन करियो तापर कोन करियो वाइन्स गुडा रो प्रोडक्शन करियो ताकि रूट ता टिके समय पे रेस्ट नबो बट कोन लेबर ता इंक्रीज हे की जाउची बट जेतु एडा को रेस्ट मिले कि वाइन प्रोडक्शन ता हमर अधिक हैला कोन हबो ना एफिशिएंसी ता हमर बॉडी बना नै लैंड रो तो किछि हेले प्रॉब्लम हबनी तो से मार्शल कोन कहउची जानछ ना अनलेस गुटे improvement in the arts of agriculture माने एग्रीकल्चर आर्ट रे से इंप्रूवमेंट आनी गिरी गुटे स्किल्ड एग्रीकल्चरिस्ट को आनी देले मु कहि परिबेनी बट नॉर्मल केस रे कोन होची ना लेबर जति की इंक्रीज हेबे तांकर कोन स्पैन ऑफ टाइम दा माने डिक्रीज हेगी जिवो हमरो मार्जिनल प्रोडक्ट से डिक्रीज हो हैला इट्स जस्ट एक्सेप्शनल केस बेसी मुंडा खेले माने से जिंस रे बेसी इन्वेस्ट करिया दरकार नै जनरल सेंस रे खाली बुझो हैला देखो से जिंसडा एक्सप्लेन करची He applied this law in the cultivation of land. According to this law, when land is kept as constant, the labor goes on increasing in the first stage. It gives an increasing return. At a certain stage, it starts diminishing. When the labor becomes relatively abundant, the marginal product may become negative. माने कौन देखो फर्स्ट कौन है यूनिट्स ऑफ लेबर माने एत्ती की फार्मर्स थिले टोटल प्रोडक्ट होची एत्ती की माने एत्ती की केजी ऑफ जहां भी इन्वेस्टमेंट हेथिबो लाइक प्रोडक्शन हेथिबो एडा होची कोन हमर एवरेज प्रोडक्ट एडा होची कोन हमर मार्जिनल प्रोडक्ट तो आमे देखिली कोन इते जे इंक्रीजिंग फेज चलला तापर कोन हला डिमिनिशिंग फेज पड़स नेगेटिव जिंसडा कोन पे आसिला सेडा से कोच नेगेटिव जिंसडा एथि पे आसीबो जेतळ को रिलेटिवली अबंडेंट रीच बे
माने एतिकी काम पे एतिकी लोक थिले सफिशिएंट हैला माने गुटे दीडा सब्जेक्ट पढ़िया पे जदी गुटे फैकल्टी अछंती टिके प्रेशर पड़िबो दीडा फैकल्टी अछंती चलिबो तीनटा जदी हेले हां ठीक अछि रिवीजन वगैरह हबो चारटा हेले आरी भलो हबो काहे कि दीडा दीडा यूनिट करिए जदी 6टा इंट्रोड्यूस कर देलो हमें केले भी पढ़ेनी ठीक से सेटा नेगेटिव रिटर्न दबो ये पढ़ी थली ये पढ़ी से पढ़ेनी तो अल्टीमेटली मार्शल कौन को जानछ ना गुटे काम पई रिलेटिवली अबंडेंट माने मोर देन एनफ जदी इंट्रोड्यूस कर देबा रिसोर्स गुडा को सेटा नेगेटिव हे जी कौन को चंद्रे जनरली एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड बुझला ना नहीं तो से कौन कहूची जित्ती की दरकार ताडू अधिक करले आगा नेगेटिव रिटर्न गुडा का आछ दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्लियर आई होप इट्स क्लियर देखो डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन in the first stage the total product average product and the marginal product go on increasing but at the end of the first stage mp starts to decline the first stage ended when the mp is equal to ap hela first stage jetolku sorry euda ko diagrammatic explanation guda in the second stage tp goes on increasing but it increases with diminishing rate ap goes on diminishing mp also goes on diminishing at the end of second stage tp reaches the maximum when tp is maximum then mp is 0 it reaches and it intersects the x axis एउडा को तुमको क्वेश्चन रे आसी परिबो हैला कोन पे आसी परे ना को स्टेज रे टीपी एमपी बिहेवियर ता केमिति अछि ताको धरि कि तमरो क्वेश्चन आसी परिबो एउडा को देखो ठीक है एमपी कर्व intersects the ap curve when the ap is maximum डायरेक्ट क्वेश्चन गुडा मन रखियार अछि the law of variable proportion is also called as law of diminishing marginal returns also known as diminishing marginal returns law of diminishing marginal returns This law is not only applicable to agricultural sector but also applicable to industrial sector and service sector. Generally कौन एडा इन्वेंट कराई थिला agricultural sector पई but एडा कौन industrial and service sector को भी imply होछ. Reasons गुडा को देखो reasons होची all units of variable factor are not homogeneous हैला आउडे कौन imperfect substitution the combination becomes wrong. से कहूची जदि आमे जहा भी लेबर इंट्रोड्यूस करछु सेउडा हम भाबी चिंती करछु तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स आसुची कोन पे रीजन कोन पे सेडा कोन हिथियो ना फर्स्ट रीजन होची आमे यूनिट्स जहा भी इंट्रोड्यूस करछु गुटे लेबरर अछि गुटे आगा जागा रे दीडा लेबरर हमर काम करथिन आमे कोन अजम्पशन नेछु कि दी जन जागा सेम माने सेम प्रकार स्किल थिबेली कहिग्री सेडा होची हमरा अजम्पशन बट जनरली गुड जन जाउथिला से कोन से भी 2 घंटा काम करथिला ये भी 2 घंटा काम करथिला बट जो 2 घंटा फर्स्ट लोक काम करथिला से पूरा सिंसियरली काम करथिला तो कोन ताको एक्सपीरियंस थिबो बट जो सेकंड लोक थिबो से किंदी काम करियार जे से खाली कथा वार्ता हेबार 2 घंटा टाइम पास करियार ता पैसा नै पळासे तो आमे भाबु जो से माने सेम नेचर रो सेम कैटेगरी रो बट एक्चुअली तांकर एफिशिएंसी डिफर होछि ना नै सो दैट्स व्हाई कोन ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर नॉट होमोजेनियस सबोडा सेम नै imperfect substitution माने होची जदी गुटे लेबरर अछि ताको कोन चासी काम बहुत इजीली होए एंड कोन कार्पेंटिंग किबा फर्नीचर काम गुडा एते इजीली होनी तो जदी जेतडो को ए दिरा जिंस अछि आमे कोन गुटे लोक को जोडा बहुत भल से आछि ताको जदी से काम असाइन करिया आम कोन एफिशिएंसी रा मिलि पारबो बट जदी से लोक को से काम आसुनी आमे कोन लोकर कमी अछि हेले कहि कि ताको जदी इंट्रोड्यूस कर देलो से जिंस कोन एफिशिएंसी देई पारिबो कि ऑब्वियसली देई पारियनी जागु जोडा आछि सेडा को धरि कोन हमको सब्स्टिट्यूट करिया अछि जदी करनु देन इट विल रिजल्ट इन imperfect substitution आ जदी imperfect substitution होची कोन हबो diminishing returns आसीबो ता रिटर्न्स टा ऑटोमेटिकली कमी जे हैला कॉम्बिनेशन बिकम्स रॉन्ग अगेन से गुटे जिंस कॉम्बिनेशन टा तमे ठीक से सेट करि पारलो Importance देखो this law is useful to firm producer for decision making regarding the output हैला firm किंबा मैनेजर की प्रोड्यूसर जे भी अछि ताके कोन करिए आउटपुट रो डिसीजन मेकिंग ना कैरी आउट करिवे according to this law the firm or producer operates only in the second stage he never chooses either the first or final stage एडा इंपोर्टेंट मार्क करो हैला से जेतळ को एनालिसिस करिवो माने लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन रो एनालिसिस करिवो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज जहां भी अछि देखो सेकंड स्टेज रे कोन अछि goes on increases but it increases with diminishing rate ap goes on diminishing एउडा को जो सब अछि से कोछि कोन ना खाली सेकंड स्टेज रे से ऑपरेट करिवो माने से पूरा चार्ट टा काटिबो जे भी इकोनॉमिस्ट अछि चार्ट टा काटि कि सेकंड स्टेज ऑफ एक्टिविटी जहां भी अछि सेडा का चूज करे से फर्स्ट करियो कि थर्ड करियो क्लियर बुझला एबे देखो assumptions तो देखि सारला में अगेन देखिया दरकार नै सेम अछि एबे देखिया हमें सेकंड लॉ जोडा कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दा क्लियर अछि हेले म भाबुची यू प्लीज रिवाइज अगेन आराम से बुझि जिवो सब जिंस बहुत एलाबोरेट करि कि कर दिछ हैला एबे देखिया हमें लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल
लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल रे कोन होची रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन द लॉन्ग पीरियड जेतलो को लॉन्ग पीरियड रे हमें स्टडी करछु लॉन्ग पीरियड माने कोन लॉन्ग पीरियड माने होची मोर देन 6 मंथ्स किबा मोर देन 1 ईयर हैला जनरली स्टडी कोन होची मोर देन 6 मंथ्स किबा मोर देन 1 ईयर द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स इज कॉल्ड स्केल कोन एडी लिखि दियो change in quantity of factors is called what scale है ना but all factors of production must be changed multiple times for example all factors of production are doubled or tripled this is done to carry out large scale production if all factors of production are halved or changed to one third it is said that the production is carried out in a small scale change in the output is called returns change in output is called returns एडा अलगारे मु कोन पे लिखोची ना एडी क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स अंडरलाइन करो एडी चेंज इन आउटपुट अंडरलाइन करो को चेंज टा कोन से क्वेश्चन डायरेक्टली पचर थाच हैला so the law of returns to scale explains the changes in output due to changes in input in the long period of time रे जेति की आउटपुट चेंज जेति की इनपुट चेंज हेले किबा जेति की क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स चेंज हेले हमर आउटपुट टा किमति चेंज होची सेडा हमें बुझबा क्लियर This law explains the proportionate change in output with respect to proportionate change in input. Now, proportionate in output kalaki resulting from proportionate change in factors of production kimba input. माने proportionate change in inputs रो रिजल्ट हेगिरी हमर proportionate change in output ना को जिंस को कंक्लूड करूची माने आउटपुट ता एक्चुअली केते की चेंज हैला हमरो इनपुट उडा को चेंज करले सेडा हमें देखे हैला एडी हमर तीनटा जिंस अछि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल हैला एडी देखा फर्स्ट लिखो एडी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल long returns to scale दा तीन प्रकार क्लासिफाई करछि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है ना
Clear? Increasing returns to scale, constant returns to scale and diminishing returns to scale. Increasing returns to scale रे कौन है ना increase in all factors माने जेतिकी भी factors अच्छी factor input अच्छी सेडार percentage रे कौन is less than increase in output माने कौन एडा जो दिया हमरा 5% example 5% तो एडा केते हला हमरा 10% हला माने factor input टा हमें 5% increase करछ माने अगर केते भी थाउ 5 kg of cotton हमें पकेले कौन आमो कौन 10 kg की पर 10 shirts हमको एक्स्ट्रा मिलला तो परसेंटेज जतो हमें देखु एटा 5% इंक्रीज करला को एटा 10% इंक्रीज हेछ बुझिला एडी कोन 5% हला को एडी 5% आगा आसिला मे बी गोटे फूड जहां भी हमें कुक करछ हला 5 ब्रेड्स पकेला को 5 ब्रेड्स आगा आसिला बट एडी कोन होछि एडी 10% हला को एडी 5% कौन पे ना हमको अधिक थिबार अछि लाइक केमिति जदी मनरे गुटे बुटटा हम पकोछ हैला बुटटा पकेला को हम क्वांटिटी एतिकी पकेथिबो बट सेटा सबमर्ज हे कि कोन एतिकी क्वांटिटी रे आसीबो देखिला को से पूरा यूनिटटा यूज हे जेछि बट हमको आसिला को यूनिट्स कम आसीबो केमिति आसीबो तार वेस्टेज अधिक थिबो कि तार प्रोसेस वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह रो जहां भी डिफेक्ट्स थाउची तो जहां भी रीजन हो कोन इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स माने फैक्टर्स हम 10% इंक्रीज करछु बट अल्टीमेटली 5% आगा हमको इंक्रीज दोछ बुझिला क्लियर एटी देखो कोन हला आउटपुट टा भी हमर इंक्रीज हैला फैक्टर्स भी हमर इंक्रीज हैला बट फैक्टर्स केतिकी इंक्रीज हेछि देखो एरो मार्क स्पैन टा एटा केतिकी इंक्रीज हेछि ना 5% बट एटी इंक्रीज केतिकी अछि 10% बुझि पाला ना नहीं डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन होछि एडा तमरो जहां भी एग्जाम ओडा अगर आसुची किमती आछि ना ए डायग्राम विषय किछि माने दबनी जनरली कोन दबो ना क्वांटिटी दबो कि फैक्टर्स दबो से दिरा जिनसर परसेंटेज दबो तमको आइडेंटिफाई करे अछि को टाइप ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एट बुझिला हैला एडी कोन हैला ना एडी भी 5% एडी भी 5% क्लियर जेति कि हमें फैक्टर्स इनपुट माने इंक्रीज करलो सेति कि आगा आउटपुट हमरो इंक्रीज हैला बट एडी कोन हैला देखो एडा होची आउटपुट हमरो एडा होची फैक्टर्स एडा होची 10% एडा होची 5% बुझिला क्लियर तुमको लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मेट टू अंडरस्टैंड जेतु तमे कोन बिट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू रे पढछ मन अछि त एमसीक्यू क्वेश्चंस हमर फॉर्मेट हैला एमसीक्यू क्वेश्चंस पे हमको प्रिसाइज आंसर दरकार तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग दा दरकार ठीक अछि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल बुझिला इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल रे कोन होची फैक्टर इनपुट इंक्रीज ता कम थाउची आउटपुट माने आउटपुट ता अधिक आछि एडी फैक्टर इनपुट जेतिके इंक्रीज होची आउटपुट सेतिके आगा होची
सब जिनस मन रखियो कोन दीटा जा केस से इंक्रीज होछ बट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ता हमें देखुछ हैला एडी कोन होची फैक्टर इनपुट इंक्रीज ता अधिक थाउची आउटपुट इंक्रीज ता कम थाउची फाइन से कोन देछि देखो तीनटा टाइप देछि से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल एडा होची हमर रिटर्न किंबा आउटपुट एडा होची कोन हमर स्केल ऑफ प्रोडक्शन माने फैक्टर इनपुट्स ए तळे तमे लिखि दियो ऐड कर दियो कॉजेस एडारो कॉजेस कोन एंड एडारो कॉजेस कोन फाइन कॉजेस कोन देखो फर्स्ट कॉज होचे हमर स्पेशलाइजेशन इनडिविजिबल फैक्टर्स डायमेंशनल इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल वॉल्यूम डिस्काउंट तमरा एडार क्वेश्चन केमती आछि म कहूच देखो कॉजेस दबो और तुमको रिटर्न्स टू स्केल ता आइडेंटिफाई करियो पड़े इट्स वेरी इंपोर्टेंट माने तुम जदि दबो इनडिविजिबल फैक्टर रिजल्ट्स इन व्हिच टाइप ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इनडिविजिबल फैक्टर्स रिजल्ट्स इन व्हिच टाइप ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ना इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम पाखरे लिखि दे पारिबो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन कोन कोन अछि देखो स्पेशलाइजेशन कहलो एटा स्पेशलाइजेशन indivisible factors then divisible economies dimensional economics and volume discounts fine dimensional economics and positive economies of scale then kon achi volume discounts एवडा रे कोन हबो ना इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हबो माने चारटा जिंस कोन कोची जदी हमर लेबरर माने अछंदी टीचर माने जे भी अछंदी से माने कोन ना जागु जो सब्जेक्ट स्ट्रांग अछि ताकु सेडा देले कोन सी अधिक रिटर्न दे पारि माने अधिक मार्क तुमको फेच करे पारिबो बट जनरली जदी मते जीएसटी फेवरेट अछि बट मते डायरेक्ट टैक्स दिया अछि तो मे भी मु सेते भल से परफॉर्म न करि पारे बुझला देन अछि इनडिविजिबल फैक्टर्स माने केतोडा फैक्टर्स थाउची ता सहित एसोसिएट हेगी थाउची माने जीएसटी सहित कोन तुमको डायग्राम काटिबाडा कोन भल से सिखियार अछि चार्ट काटियाडा भल से सिखियार अछि तो ए दिरा जिंस हमर इनडिविजिबल फैक्टर्स ए दिरा जिंस कोन हमर इनडिविजिबल फैक्टर्स तो से जिंस को केबे हम डिवाइड करिया पे चेष्टा करिया कथा नै डायमेंशनल इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल माने कोन ना जेते अधिक हम प्रोडक्शन एक्टिविटी करिया हमर कॉस्ट पर यूनिट ता सेते कम पड़े तो आमे कोन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को धरि के आउटपुट में इंक्रीज करिया ताकि कोन हमर कॉस्ट पर यूनिट ता कम पड़िबो दैट इज आवर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल देन आछि वॉल्यूम डिस्काउंट्स जेतोला हम कोन डिस्काउंट ता अधिक केबे मिलेबो जेतोला हम होलसेल रे नबो तो हमर रॉ मटेरियल हो किबा जहां भी हो हमर जहां भी कॉस्ट इनकर होची आमे ट्राई करिया कोन लमसम अमाउंट रे नबा तो हमर कोन वॉल्यूम डिस्काउंट ता लागिबो ताकि कोन कॉस्ट पर यूनिट ता हमर डिक्रीज हिज क्लियर देन देखिए हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स रो कॉजेस कोन मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल लिमिट टू ह्यूमन फैक्टर लैक ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन राइज ऑफ प्राइस ऑफ इनपुट्स कौन अच्छे मेरा मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स and diseconomies of scale then limitations of human factor माने पर्सन केति की करि पारिया ताडो अधिक हमें तो देई पारियानी देन एडा होची सबटु बड़ इश्यू लैक ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन पीपल मानंग भितरे जदी निज भितरे कोऑर्डिनेशन रहबनी सी जेते इफेक्टिव हो ये जेते इफेक्टिव हो झगड़ा लागि थी मो मोर इंफॉर्मेशन कहिनी
मोर अकाउंटिंग इनफॉरमेशन जोड़ी सरीबो तोर सिटी स्टार्ट होबो जदी मु कहनी तू करि पारुनु पर्सनल ग्रड्स रखी जदी कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन नाही देन इट विल ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन डिमिनिशिंग रिटर्न्स देन कोन आछे हमरो राइज ऑफ प्राइसेस बुझिला अल्टीमेटली एडा होची कॉजेस तमरो मैथ्स क्वेश्चन फॉर्मेट होची एडा बुझिया पे मु एडा लिखली आउ तमरो क्वेश्चन एथिरो एंड से कॉजेस रो आसीबो क्लियर सेम जिनसुला से सेडी एक्सप्लेन करची हला मो जोडा डायग्राम काटी के तुम बुझेई छी सेम जिनसुला से एक्सप्लेन करची ठीक अछि लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन ना हमें देखिलु देखो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल रे अंडरलाइन करो when we double the inputs the output will be more than double एटा डायरेक्ट क्वेश्चन थिला तमरा जेबे इनपुट डबल होची हमर आउटपुट डबल हेबा कथा आउटपुट केते डबल हेबा कथा बट सेटा कोन हेची मोर देन डबल माने एटा को केस अंडर आछि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन कोन पड़थिला whenever the input is double the output was more than double which of the following case is this is the case of increasing returns to scale तो मोर नेक्स्ट क्वेश्चन होची whenever the output is double whenever the input is double the output is also double एटा को केस constant returns to scale हैला आउडी केस टा कोन हबो whenever the input is double the output is less than double diminishing rate of return ठीक अछि diminishing returns to scale अच्छा एडी कोन कहछि देखो proportionate increase in output and proportionate increase in input are same खाली same टा अंडरलाइन कर दियो एडी it means when we double the inputs the output will be double there are no causes for please underline no causes for constant returns सबले मन रखो increasing by diminishing by causes अछि but constant by केबे भी causes नाही it is just an indicator that for the ending of increasing returns and commencement of diminishing returns एडा भी कोटे क्वेश्चन आस्थिला हैला एडी प्लीज ऐड कर दियो constant returns CR is an indicator of the conclusion of increasing returns and commencement of diminishing returns बुझी पालो माने इंक्रीजिंग ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भितर आछि कांस्टेंट माने एडा कंप्लीट होछि एडा स्टार्ट होछि एली कया पे एडा होछि हमरा इंडिकेटर हैला कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इज एन इंडिकेटर ऑफ द कंक्लूजन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड कमेंसमेंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्लियर commencement means the start commencement of diminishing returns commencement or start of diminishing returns diminishing रे से कौन कोई छी if proportionate increase in output is less than the proportionate increase in inputs it is called as diminishing returns it means when we double the inputs the output will be less than the double ठीक अछि this was all it ठीक अछि तमरा मेन पोर्शन होची लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्वेश्चन फॉर्मेट त मु कहि देली आ तमरा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल रे कोन पढिबो मु कहि छी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रे तमरा जब प्रोडक्ट बिहेवियर टच माने एवरेज प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट एवडा सब किमते वेरी होची सेडा रे क्वेश्चन आस ठीक अछि थैंक यू